बड़ा बॉक्स करके ढिंडोरा पीट दो, गाँव में बता दो। यही है मिडिल क्लास। कौन सा? 20 से 30। समझ में आया? Welcome back, guys. I hope you understand mean in the last video properly and do a lot of sums to get in touch with perfectness, right? So, in this video today, this class, we will discuss about the other two हथियार. बताया था ना 3 हथियार थे. Central tendency हथियार तो बहुत है, लेकिन हमारे पास 3 है. मीन तो डिस्कस कर चुके थे. We were very mean in the last class. Now in this class we will discuss mode and median. Let us come to median. Median, ठीक है. और मीन क्या किया था हमने? उसको निकनेम क्या दिया था? एवरेज. क्लास का एवरेज को बोलते थे मीन. लेकिन मीडियन को एवरेज नहीं बोल सकते. व्हाट कैन वी कॉल द मीडियन? द मिडिल मोस्ट वैल्यू. Central tendency, while measuring the central tendency, we have many type of techniques. Mean, median, mode. Mean measures the average and finds the central tendency. Median does do that. Median finds the middlemost value of an observation, right? Where are the observations situated? Middlemost value क्या है? Mean भी उसी के आसपास ही आता है, ठीक है, लेकिन median का तरीका अलग है. The error is different, the situation is different, the formula is different, and the approach is different, right? So median is like the finding the middlemost value. In ungrouped data in class 9, you had studied to find it by arranging them in a particular sequence. Ascending order में कर दो, descending order में कर दो, number of terms निकाल दो, n by 2 f term और n by 2 और n by 2 plus 1 f term का average, even or odd. But एक order है. But here in a group data, there is a particular formula for median, which is given by median is equal to L plus n by 2 minus greater than capital N CF by F whole into H. This is what you will follow in class 10. Okay. So what is L? What is all this? There are so many things. इसको याद रखना है, लेकिन क्वेश्चंस करते करते ये याद रह जाएगा. दैट शुड बी योर अप्रोच. अब बात ये है कि L n by 2 CF F H. H तो आई नो क्लास साइज व्हिच इज हाउ मच 10. लास्ट क्लास में स्टडीड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो H इज 10. फाइन, वो फैमिलियर चीज है, हमें पता है भाई इसके बारे में. H अपना है हमें, ठीक है, लेकिन F पता नहीं है, n by 2 L इसे पता नहीं है. CF क्या है? CF क्या पता है तुम लोगों को? CF से ज्यादा GF पता है, CF नहीं पता, लेकिन CF चाहिए हमें. अभी CF ये सब क्या है? पहले सबसे पहले हम देखेंगे n by 2 क्या है. क्या है? n by 2. n by 2 फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर दिया, समेशन fi बोला 80. This is n. Understood? n is what? The sum of all frequencies. N or n by 2 will be how much? 80 by 2, which is 40 in this particular question, right? So n is the sum of all frequencies, right? Summation fi जो है वही है. Got it? Now in that formula, L plus n by 2 minus CF by F whole into H. इतना बड़ा फॉर्मूला मीडियन के लिए, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनो. n by 2 निकाल दिया. फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग मीडियन इज फाइंड n by 2. सेकंड स्टेप एंड foremost स्टेप इज फाइंड द मीडियन क्लास. ठीक है, फाइंड द मीडियन क्लास. अच्छा, मीडियन क्लास कौन सा होगा? दिस इज प्री डिटरमाइंड. हाउ? ना, what you will do for this, you need to learn a new thing which is known as CF or cumulative frequency. Okay,
cumulative frequency, subsequent frequency. To do that, n is 40. Remember, I am rubbing all this. N by 2 is 40. Okay. Cumulative frequency of CF. What is it? It is nothing but the addition of subsequent frequencies one after another. Like this here is 5. यहाँ तक कितना है? 5. अब यहाँ तक पहुँच गए. 5 plus 15, 20. यहाँ तक आए 20 plus 35, 55. Then यहाँ तक आए 55 plus 25, 80. Means ये यहाँ से यहाँ उसके बाद ऐड करो इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर. All these steps where they are nothing but adding the next frequency and finding the next one. And mark you the last one must be equal to n. Cumulative of all frequencies must be equal to total frequency. यहाँ पे तुम this is check point. यहाँ पे check करना. अगर ये 80 नहीं है, means you have done some addition incorrectly, right? So if you have done correctly, the cumulative frequency will be 80. And if it is 80, you are set to do the next step, right? So now how to find the middle class? First step was to find n by 2. n by 2 निकाल दिया first step. Second step, median class. Median class कैसे निकालेंगे? Median class, remember, will be the class whose cumulative frequency is just greater than or equal to the n by 2. Right? Whose cumulative frequency is just greater than the n by 2. So n by 2 कितना है? 40. 40 is just higher. 55. Right? So this यहाँ पे बड़ा बॉक्स करके ढिंडोरा पीट दो, गांव-गांव में बता दो, जोर से अपने दिमाग में घुसा दो कि ये है मीडियम क्लास. ठीक है, यही है मिडिल क्लास. कौन सा? 20 से 30. समझ में आया? दिस इज द मिडिल क्लास. अंडरस्टूड? आफ्टर फाइंडिंग द मिडिल क्लास, ऑल अदर थिंग्स you got it. So now n by 2 you have. H is familiar. What is L? L is nothing but the lower limit of the middle class. इसीलिए इसका हमने ऐलान किया था, क्योंकि यहीं से बाकी सब आएगा. इसका लोअर लिमिट, अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 20. सो यहाँ पे L कितना होगा? 20. Now this is also familiar. See how we are getting close to the formula. अपना अपना लगा धीरे-धीरे. n by 2 समझ में आया? अच्छा, L निकल गया, समझ में आया? H is familiar. CF यहाँ पर ट्विस्ट है. CF सब समझते हैं कि अच्छा यही है 55. नहीं, this CF is the cumulative of the frequency of the class preceding the middle class. इसका ऊपर वाला यही है CF. यहाँ पे भी ट्विस्ट है. ये ट्विस्ट पॉइंट्स है ना, इसको याद रखो. इसको याद रखिए, फॉर्मूला याद रहेगा, काम करो. सो n by 2 निकाल दिया, और n by 2 से जस्ट ग्रेटर cumulative frequency is your median class, and the lower limit is the L, and the cumulative frequency preceding the middle class is your CF. ये भी हो गया familiar. कितना है? 20. Clear? 2 dot. Remember this. Do not forget. And F is nothing but the frequency of the median class. Understood or not? सारे चीज familiar हो गए. Now only thing you need to do is put the formula, get the answer. Again listen if you have doubt. First found n by 2 frequency total by half. Then find cumulative frequency. Then find the cumulative frequency which is just greater than n by 2. 40 से ज्यादा 55. बॉक्स कर दो, ये मेन स्टेप है, और इसमें लिख दो मीडियन क्लास साइड में. राइट? आफ्टर दैट यू फाइंड CF, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, जस्ट उसके ऊपर जो है. राइट? देन यू फाइंड F व्हिच इज मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी, इसमें कुछ ट्विस्ट नहीं है. एंड H यू नो व्हिच इज द क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब कुछ है हाथ में.
सो मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे डालेंगे L की जगह 20 प्लस n/2 की जगह 40 माइनस CF की जगह 20 और F की जगह 55 के पीछे जो है क्या है 35 और H की जगह 10। ठीक है, सो कितना आ गया 20। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन में one small tip I am giving you, when you calculate this kind of thing and if it is a big question, बड़े बड़े नंबर होंगे, what you need to do is do not take LCM and do all that. First simplify this part, whatever you get here add it to 20. Understood? Same with assume mean method also. Assume mean को इसके साथ LCM मत करना, डेविएशन के साथ, याद रखो ये पार्ट। अब यहाँ पे बहुत बच्चे LCM करते हैं और कैलकुलेशन लंबा होता है, फिर मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा। Don't go in that path, okay? So what you will do? You will only calculate this part. 40 minus 20, 20 by 35 into 10. Understood? This part you will calculate 5 to 5 7, which is 40 by 7. This is 20 plus 40 by 7 you can calculate. ठीक है? 7 5 by 35, 5 by 0 7 7 49, 1 by 0 7 1, 5.71. So your answer, rubbing this part, your answer will be 25.7. In the last video, in the same question, we are taking the same question to discuss mean, median and mode, so that you understand better, right? You will apply the same concept in any question. So my point here is 25 was the mean, remember in the last video? Yes. But the median came out to be 25.7, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसका नाम मीडियन है, वरना यही मीन होता। समझ में आया कि नहीं? तो लेकिन आसपास है कि नहीं? Yes. सेंट्रल टेंडेंसी वो भी है तो ये भी है, राइट? सो 25.71 इज योर रिक्वायर्ड मीडियन, राइट? सो पुट योर स्ट्रेस ऑन द फॉर्मूला। ये L क्या है? n/2 क्या चीज है? ये CF क्या चीज है? ये F क्या चीज है? और ये H क्या चीज है? ठीक है, अंडरस्टूड? ये सब पॉइंट में स्ट्रेस देना, ठीक है? तुम बाकी चीजों में स्ट्रेस देते हो आजकल, लगता है ये इल्लू क्या है, इस सब में स्ट्रेस मत देना, इसमें स्ट्रेस देना, राइट? सो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे गंदगी भर गई है। अच्छा, ये गया मीडियन और ये गया CF गॉन, और ये गया मीडियन क्लास जो हमने वीडियो का बेटा था, वापस ले रहे भाई, माफ करो। थोड़ा इसको याद है कि नहीं क्वेश्चंस क्या था? यस, मुझे तो मैं भूल गया, थोड़ा बताना। 20 से 30, 30 से 40, ये 15 था, ये कितना था? 35 और ये 25, राइट? चलो बैक टू द सेम क्वेश्चन but with a different objective. What? Mode. ठीक है? Mode is also the third weapon, right? The third weapon of central tendency, which is mode. जैसे उसको mean को बोलते हैं average, median को बोलते हैं middle most value. Mode is what? Mode is the most frequently occurring observation. Mode gives you the idea about most frequently occurring observation, या फिर वो ऐसा वैल्यू देगा जो वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी। यू थिंक अबाउट इट, इफ इन a class out of 20 students 15 have secured 21 out of 40, won't the central tendency be around 21? उसके आसपास नहीं होगा क्या? अगर एक क्लास में मैक्सिमम बच्चे एक 21 रखे तो पूरा क्लास का मार्क भी 21 के आसपास ही होगा, बाकी 5 बच्चे कुछ भी करें, राइट?
तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना. So इसीलिए mode is also a measure of stability. It will give you the most frequently occurring observation or something near it and tell you an idea about where the data is lying about. इसीलिए mode भी पढ़ेंगे. अच्छा mode में क्या पढ़ेंगे? mode में फॉर्मूला जैसे वहां पे पढ़ा, यहाँ पे भी वही. क्या है फॉर्मूला मोड का? L plus f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 whole into h. Got it? ये यहाँ पे भी देखो, इनको भी नहीं जानते भाई कौन है भाई. चलो इसको क्या है? L पता है, थोड़ा सा पता है, h तो अपना आदमी है, ये सब पता नहीं कौन है भाई. f1 f0 f2 सब नए नए चीज, लेकिन इसको भी समझ लो तो ये भी अपने लगेंगे. मोड में सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? निकालोगे मॉडल क्लास, राइट? द वे यू फाउंड आउट मीडियन क्लास, हियर द फर्स्ट स्टेप इज आल्सो टू फाइंड द मॉडल क्लास. नाउ मॉडल क्लास विल बी द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे क्या है? 35. सो यहाँ पे इसको बॉक्स कर दो और गली गली में ऐलान कर दो कि यही है मॉडल क्लास. ठीक है. Once you have decided this, half of the battle is won. ठीक है. If this is the model class, the class with the highest frequency, now all of these will be coming to you slowly slowly. How? Means यहाँ पे देखो सिंपल आइडिया बता रहा हूँ. 0 1 2 ये है 1, इसके ऊपर वाला 0, नीचे वाला 2. F F understood? Modal class frequency you can call it as F1. The class preceding it, its frequency will be F0, and the below it will be successive one will be F2. 0 1 2 ये याद रखना. 1 will be the F1 will be the frequency of the model class, उसके ऊपर वाला 0, नीचे वाला 2. This much you remember. अब सब समझ में आया क्या 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 डालोगे? ठीक है. और L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास. जैसे हमने किया था मीडियम क्लास में किया था, वैसे मॉडल क्लास में लोअर लिमिट है ये. तो देखते हैं मोड कितना आता है. 20 प्लस f1 35 minus f0 15 by 2f1 2 in 35 70 minus f0 15 minus f2 25 into h class size 10. Okay, 20 plus 35 minus 15 is 20 into 10 by क्या ये प्लस है ना और ये माइनस है, -15. ठीक है. तो 70 minus 15 minus 20 मतलब -40 30. करेक्ट? यस. चेक इट. ठीक है. तो एक 0 चला गया, कितना बचा? 20 प्लस 20 by 3. इस एनी प्रॉब्लम? into 10. अच्छा ये 10 छोड़ गए हम, ये 10 तो अंदर आ गया ना. ये देखो मैं इसको अपना दोस्त बना चुका हूँ. ठीक है. सो दिस 10 is outside, already I have taken it inside. No problem. So 10, so let me write it in a clear fashion. इसको मिटा देते हैं. Coming back to here, इसे आरोपा मत करना एग्जाम में. ठीक है. ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ. 20 plus, so this is 20 by 70 minus 40 30. 20 by 30 10. Correct है. So 20 by 3, which is how much? 6.66 like this. Okay. Which is how much? 26.6 bar. Okay. So in the last videos and this video continuously, the mean was found out to be 25, median was found out to be 25.7 if I recall correctly, and mode came out to be 26.6 bar. So don't you think three of them are pointing towards one direction? Yes, sir. That is why they are called the measures of
central tendency. Understood? They have given us an idea about where the class mark or about which mark all the students have secured their marks, near to which mark. 25 according to mean, 25.7 according to median, and mode gives us 26.6. So in three of these measures of central tendency, our objective is to find the same thing. Did you understand? Yes, sir. Clear? In these videos, these two classes, we understood how to apply the formula only. Clear? Mode, median, mean. And there is a relation relating all the three of them, okay, which is known as what? The empirical formula. Which is how much? Does anyone of you know? 3 median is equal to Mode plus 2 mean. mode plus 2 mean. This formula what it does is it relates mean, median and mode to each other. Okay. If in a question this is given, you can find the other third one. So in this formula you can relate three of them. Okay. So what I have taught you in these two videos is how to apply the formula in mean, finding out mode and finding out median. For this year OGIV is not in the course, so maybe in the next video, some other video, I will come with the OGIV, cumulative frequency and OGIV, and you practice a lot of questions, go through a lot of questions. In the upcoming videos we will discuss about how to find a missing frequency from the mean in case of mean, mode and median. Okay, we have taken a single question to understand all the different formulas of a chapter. Hope you understand it well and apply it to your own advantage by solving a lot of questions. That's all. Thank you. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama, ay, ay, ay,